Now here the topic is over extraction of fossil fuels. Fossil fuels are formed by the degradation of dead plant and animal matter buried under the earth's crust over million of years. Fossil fuels कैसे फॉर्म होते हैं? By the degradation of dead plant and animal matter जो buried हो गए थे earth's crust में over millions of years ago. Petroleum, natural gas, and coal, these are the commonly used fossil fuels. These fossil fuels are considered non-renewable as they require millions of years to form again, and their overuse is leading to their depletion much faster than the new ones are made. इनको हम क्या consider करते हैं? Non-renewable, as they require millions of years to form again, एंड इनका हम ओवर यूज़ बहुत ज़्यादा कर चुके हैं और उससे क्या हो रहा है? डिप्लीशन बहुत ज़्यादा हो रहा है दैन द न्यू वंस आर मेड. Majority of the world's energy requirements are fulfilled by fossil fuels. Apart from energy, they have various other uses that have led to their over extraction. So some of these are the major consequences of over extraction of fossil fuels. So first one is global warming and climate changes. Burning of fossil fuels releases a lot of toxic gases like carbon dioxide, nitrogen oxide, sulfur dioxide, etc. अगर हम burn करते हैं fossil fuels को तो उसमें से toxic gases release होती हैं. वो toxic gases ये हैं where carbon dioxide is a greenhouse gas contributing to global warming as it is responsible for the average increase in the earth's temperature. Global warming हो रही है, उससे क्या हो रहा है? अर्थ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, अफेक्टिंग इकोसिस्टम्स अक्रॉस द ग्लोब. सेकेंड वन इज पोल्यूशन ऑफ एयर, वाटर एंड लैंड. Burning of fossil fuels creates lot of waste that is dumped on open lands, contaminating groundwater sources as it generate a lot of toxins. अगर हम fossil fuels को burn करते हैं तो उससे बहुत सारा waste हो रहा है और वो ऐसे ही खुला लैंड्स पे पड़ा हुआ है. उससे क्या हो रहा है? कंटामिनेट हो रही है ग्राउंड वाटर सोर्सेस और वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिन्स हैं, वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिन्स जनरेट कर रही हैं. इन टॉक्सिन्स से इफेक्ट हो रहा है वेजिटेशन को, वाइल्ड लाइफ को एंड मरीन लाइफ को. थर्ड वन इज एसिड रेन. व्हेन द गैसेस लाइक नाइट्रोजन एंड सल्फर स्पेशली नियर इंडस्ट्रियल एरियाज कंबाइंड विद वाटर वेपर और रेन वाटर, जब ये गैसेस नाइट्रोजन या सल्फर कंबाइन करती हैं वाटर वेपर और रेन वाटर के साथ, देन दे फॉर्म ड्रॉपलेट्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड. एंड व्हेन दीज फॉल ऑन द अर्थ, जब वो ड्रॉपलेट्स अर्थ पे गिरती हैं विद रेन वाटर, सो देन दे फॉर्म एसिड रेन. देन द एसिड रेन कैन बी अ थ्रेट टू ऑल लिविंग बींग्स एंड ऑल्सो लीड्स टू डिस्ट्रक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स. और ये जो एसिड रेन है वो बिल्कुल डेंजर है हम लिविंग बींग्स के लिए, और इससे क्या हो रहा है? जो मॉन्यूमेंट्स हैं वो भी बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो रहे हैं. फोर्थ वन इज हेल्थ इम्प्लीकेशंस. अकॉर्डिंग टू द WHO, दैट इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, as many as 160,000 people die each year from the side effects of climate changes, and the numbers could almost double by 2020. ये और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा. ये किसके साइड इफेक्ट्स हैं? सारे जो क्लाइमेटिक चेंजेस हो रहे हैं. These side effects range from malaria to malnutrition and diarrhea, which are caused during floods and droughts and in warmer temperatures. And fifth one is exhaustion of existing reserves. The excess use of fossil fuels may result in their depletion, which will lead to energy crisis in near future. अगर हम fossil fuels को बहुत ज़्यादा excess में use करेंगे तो उससे डिप्लीशन होगा, एंड विच विल ऑल्सो लेड टू एनर्जी क्राइसिस इन द कमिंग फ्यूचर. नाउ हियर आर सम alternate sources of energy. To conserve or reduce the use of fossil fuels, alternate sources of energy are being used to produce electricity. वो हम कौन कौन सी हैं? Renewable energy is sustainable as it is obtained from sources that are inexhaustible, unlike fossil fuels. Renewable energy sources include wind, sun, water, all of which occur naturally on our planet, and it is a clean and non-polluting energy. Many forms of renewable energy do not emit greenhouse gases or toxic waste in the process of producing electricity. कुछ बहुत
टाइप की जो रिन्यूएबल एनर्जी है वो ग्रीन हाउसेस या टॉक्सिक वेस्ट एमिट नहीं करती when they produce electricity. It is a sustainable energy source that can be relied on for a long term. It is also very cost effective and efficient. Windmills. Naturally blowing wind energy is being used to run windmills to produce electricity. जो आपकी विंड ब्लो करती है तो उससे नेचुरली क्या होता है, विंडमिल्स रन होती हैं and then they produce electricity. Windmills are used for pumping water or grinding grain. Today, the windmill's modern equivalent, a wind turbine, can use the wind's energy to generate electricity. For large-scale production of wind energy, a large number of wind turbines are usually built together to form a wind farm. Second one is solar panels. Producing electricity from solar energy was the second discovery of the alternative sources of energy. Solar power is produced by collecting sunlight and converting it into electricity. अगर हम solar panels लगाते हैं तो solar power कैसे produce होती है, sunlight collect हो जाती है और वो convert कर लेती है electricity में. Large flat photovoltaic cells in the solar panels, जो उसमें क्या होते हैं, cells होते हैं solar panels में, वो trap कर लेते हैं solar energy को and then they convert them into heat in the water. The energy generated can be used for lighting purpose at home. जो energy generate हुई है उससे हम अपने घर, पूरे घर की lighting purpose के लिए भी use कर सकते हैं. Similarly, solar water heaters are also used where heat from the sun is used to heat water in glass panels on the roof. Third one is micro hydro systems. These systems are recommended in remote areas where there is a continuous supply of water. ये वहाँ recommend करे जाते हैं जहाँ पे continuous supply of water है. They convert the flow of water into electrical energy. A turbine can be fully immersed in water. जो turbine होता है वो fully immersed होता है water में. The flowing water rotates the turbine's blades. जो flowing water होता है वो क्या करता है, rotate करता है जो turbine के blades होते हैं. Then the amount of energy created depends on the amount of water flowing on the turbine as well as the size of the turbine. जो amount of energy होता है वो depend करता है कि कितना water flow हो रहा है turbine पे और as well as the size of the turbine. Micro hydro systems are cheap, reliable and non-polluting source of energy. Fourth one is biomass energy. Biomass energy is the energy from organic matter like wood, dried vegetation, crop residues, aquatic plants and even garbage, which can be used for various applications. Biomass is used to produce heat and electricity. It is such a widely utilized source of energy, probably due to its low cost, that it accounts for almost 15% of the world's total energy supply, as much as 35% in developing countries, mostly for cooking and heating. So, biomass energy plays a vital role especially in rural areas. Biomass energy का भी बहुत बड़ा रोल है rural areas में भी. Conservation of natural resources is one of the major responsibilities and concern of the present time. Many national and international organizations are working towards the conservation and protection of our environment by creating awareness about the sustainable use of natural resources. बहुत सारी national और international organization work कर रही हैं to protect the environment from sustainable use of natural resources और उन्हें aware कर रही हैं कि हम natural resources का use करें. Conservation of natural resources in a sustainable manner is a responsibility as citizens and we should aim to achieve it. The mantra for sustainable use of resources in our environment is by the adoption of the principle of the 4 R's: reduce, reuse, recycle and refuse. हमें ये 4 R's अपनी daily life में use करने होंगे जिससे कि हम अपनी conserve कर सकें natural resources और उन्हें protect भी कर सकें. So that's all about this chapter. Thank you.